हेलो वेलकम टू VipraMinds चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल चैप्टर ऑफ क्लास 10th. So the first question here is, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x, that is x square minus 5x plus 4, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha into beta. Okay, so before proceeding for this video, we have to know the relation between the sum of zeros and the product of zeros with the coefficients of given polynomial. So हमने already ये relation discuss किया हुआ है that suppose this is a polynomial, quadratic polynomial ax square plus bx plus c. If this is a one quadratic polynomial, so then हम बोलते हैं alpha and beta are the zeros of this given polynomial. Okay, so agar alpha and beta are the zeros, so we know that the sum of zeros, that is alpha plus beta, will be nothing but equals to minus b by a. So minus b, what is b? The coefficient of x by a, that is the coefficient of x square, and the product of zeros is always equal to c by a, that is the constant term and the coefficient of x square. ये रिलेशन कैसे आया वो ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है. आप हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है फॉर क्लास 10, उसमें आपको उसका वीडियोस मिल जाएगा. ओके, सो ये रिलेशन जो है उसके बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं. सो दिस इज़ लेवल 1. लेवल 2 के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. सो नाउ 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड द कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, दैट इज़ ए बी एंड सी हम फाइंड आउट करेंगे. सो द वैल्यू ऑफ ए हियर इज़ 1, द वैल्यू ऑफ बी here is minus 5 and the value of c is 4. So first of all हम a, b and c का value find out करेंगे. And we know that alpha and beta are the zeros. अब वो statement लिखना है that alpha and beta are the zeros of the given polynomial, and comparing with the given quadratic polynomial we got the value of a, b and c. So now we know that the sum of zeros, that is alpha plus beta, is nothing but equals to minus b by a is equal to minus b is minus 5 by a is 1, so minus into minus plus, so 5 by 1, that is 5. So the value of alpha plus beta is 5, and alpha into beta, so alpha into beta is c by a. So what is c? 4 by 1, so it will be 4. So ये आगे हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा. अब हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो लिखते एक्सप्रेशन, दैट इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. ओके, इक्वल्स टू, अब ये जो फर्स्ट दो रेशियोज़ है इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा इंटू 1 इट विल बिकम बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 इज़ अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा. सो दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. ओके, सो नाउ दिस इज़ बीटा प्लस अल्फ़ा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा इज़ नथिंग बट अल्फ़ा प्लस बीटा, that is nothing but alpha plus beta upon alpha beta minus 2 alpha beta. And what is the value of alpha plus beta? We already know, that is 5 divided by, what is alpha into beta is 4 minus 2 into alpha beta. So what is alpha beta? Alpha into beta, that is 4. So ये हो जाएगा 5 by 4 minus 8. Okay, so यहाँ denominator में is nothing but 1. So we'll do the cross multiplication. So 5 into 1 5, 4 into 8, that is 32 divided by 4. So it will be nothing but minus 27 by 4. So therefore if alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial, then 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta का जो value होगा, that will be nothing but minus 27 by 4. Hope you have understood. Now we'll see the next one. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत से टाइम बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इवन आपके स्कूल्स के जो यूनिट टेस्ट होंगे या प्रीलिम्स होंगे तो उसमें भी काफ़ी टाइम ऐसे टाइप के क्वेश्चन आती है. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन. अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the given quadratic polynomial, the p of y, that is 5y square minus 7y plus 1. Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. That's very easy. मैं एकदम शॉर्ट में फटाफट आपको करके दिखाता हूँ. आई नो काफ़ी लोग को समझ में भी आ गया होगा कि कैसा करना है. इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर देता हूँ क्योंकि फुल पेज स्क्रीन में नहीं आ रहा है. ओके, सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5. सो जिनको समझ में आ गया वो ये वीडियो को यहीं पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड देन रीचेक द आंसर जो मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ. सो -7 and c is 1. ओके,
So now alpha and beta are the zeros, so alpha plus beta will be nothing but minus b by a. So minus of minus 7 by a is 5, so it is 7 by 5. So the value of alpha plus beta is 7 by 5, and alpha into beta is c by a. So what is c here? The value of c is 1 by a is 5, so 1 by 5. So that is alpha into beta. Okay, so now we have to find out the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to, now again do the cross multiplication. So beta into 1 is beta, alpha, it is alpha into beta. So beta plus alpha is nothing but alpha plus beta by alpha beta. What is alpha plus beta is 7 by 5 divided by what is alpha into beta is 1 by 5. So it will be 7 by 5 into reciprocal हो जाएगा, so it will be 5 by 1, so get cancelled. So 7 by 1 is nothing but 7, so the value of here is 7. Okay, hope you have understood. Now we'll see the next question. Now if alpha and beta are the zeros of the given quadratic polynomial, find the value of alpha square beta plus alpha beta square. Okay, so यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन. सो दिस आर द लेवल 1 क्वेश्चन. लेवल 2 के क्वेश्चन जो होंगे, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लेवल 2 के क्वेश्चन आप तो ईजिली कर पाओगे वो भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो यहाँ पर अगेन विल सी व्हाट इज़ ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है -5 एंड सी का वैल्यू क्या है -1. ओके, सो अगेन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज. सो अल्फा प्लस बीटा is minus b by a is minus of -5 by 4, so minus into minus plus, so 5 by 4, and alpha into beta is c by a, so c is -1 by 4. So ये आ गया हमको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. सो अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है. हियर इज अल्फा स्क्वायर, दैट इज अल्फा इंटू अल्फा, और यहाँ अल्फा है, तो दैट मीन्स वन टाइम अल्फा इज कॉमन दोनों में. और यहाँ पर भी सेम बीटा और बीटा स्क्वायर है, सो बीटा इंटू बीटा, सो बीटा कॉमन है. सो दोनों में अल्फा और बीटा कॉमन है. सो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा था, तो अल्फा स्क्वायर में से अल्फा बाहर गया तो इट विल बी अल्फा, और बीटा था तो बीटा बाहर आ गया, सो 1 बचेगा, तो अल्फा इंटू 1 दैट इज अल्फा, प्लस यहाँ अल्फा बीटा स्क्वायर, सो अल्फा ऑलरेडी बाहर आ गया है, बीटा स्क्वायर में बीटा बाहर आ गया है, सो क्या बचेगा इधर बीटा. So we are getting alpha into beta and bracket में alpha plus beta, and we know the value of alpha into beta is -1 by 4. Alpha into beta is -1 by 4, and alpha into beta is 5 by 4. So it is -1 into 5 is -5 by 4, that is 4 into 4 is 16. So it is -5 by 16. Okay, hope you have understood. Now we'll move on to the next question. The same way, यहाँ पर हम पहले a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में. सो a इज़ 1, b इज़ -4 एंड c इज़ 3. ओके, सो अगेन अल्फा प्लस बीटा वैल्यू फाइंड आउट करें, तो अल्फा इंटू बीटा इज़ अल्फा प्लस बीटा इज़ -b by a, सो माइनस ऑफ -4 by 1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 by 1 दैट इज़ 4, एंड अल्फा इंटू बीटा इज़ c by a, सो c इज़ 3 by 1, so it will be 3. c by a is 3 by 1, that is 3. Okay, so we got alpha plus beta and alpha into beta. Now we have to find out alpha raised to 4 beta cube plus alpha cube beta raised to 4. Okay, now if you see alpha is here 4 into 4 alpha into alpha into alpha into alpha, मतलब 4 times multiply हुआ है. So यहाँ पर 3 times alpha into alpha into alpha, so that is alpha cube is common, दोनों में alpha cube common है, and यहाँ पर beta cube है और beta raised to 4 है. So beta cube क्या है, कॉमन है. सो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा रेज़ टू 4 था तो अल्फ़ा क्यूब बाहर आ गया, तो इधर अल्फ़ा बचेगा, बीटा क्यूब बाहर आ गया है कॉमन, एंड यहाँ पर नेक्स्ट इज़ अल्फ़ा क्यूब बाहर आ गया है, बीटा रेज़ टू 4 है तो यहाँ बीटा बचेगा. सो वी गॉट अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा. सो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू तो हमको पता है, एंड अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा द होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिकॉज दोनों का पावर सेम है. सो अगर पावर सेम है तो अल्फ़ा बीटा रेज़ टू 3 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा. Okay, so what is alpha beta? So alpha into beta is 3, so it will be 3 cube. Alpha into beta का वैल्यू क्या है 3, so it will be 3 cube. And what is alpha plus beta? Alpha plus beta is 4. Understood? So it is 20. Alpha cube is 27 into 4. So 7 into 4 is 28. 2 is carried, 8 and 10. So it is 108. So the value of alpha raised to 4 beta cube plus alpha cube beta raised to 4 is 108.
होप यू हैव अंडरस्टूड. सो विल सॉल्व द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस ऐसे टाइप का है, थोड़ा सा वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा. सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको समझ में आ गया सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन येस आई हैव अंडरस्टूड. अगर आपको कुछ इसमें डाउट है, कुछ भी डाउट है यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. And if you like our channel, please subscribe our channel and please share this video with all your friends, those who are in 10th standard. So we'll meet in the next section. Thank you.